call on Kunzis, I would like to request the Honorable Lieutenant be seated on the stage, please. And Kunzis, I would request you to for the background of the project. 1970s, when the Geological Survey of India started exploring geothermal with demonstration projects of mushroom cultivation and poultry farming in Puga. Several efforts have been made after that for the development of geothermal in India. Fast forward to 2012, Dihar, along with Ladakh Renewable Energy Development Agency, had done preliminary studies for a 3 megawatt binary power plant in Chumatham. 2013 and 14, JKSPDC tendered for a 3 megawatt pilot project at Puga. Coming to 2018, the idea of this project was conceived between Ladakh Autonomous Hill Development Council and ONGC Energy Center. Finally, now in 2021, the most awaited moment is here when we signed the MOU between UT Ladakh, LHDC Leh, and ONGC Energy Center. With this MOU, a step is being taken to include geothermal in the growing renewable energy sector of India. And with this, Ladakh will be a pioneer in the geothermal development in India and a true example of carbon neutral union territory. Without taking much time, I would request Shri Ravinder Kumar, Secretary Power and Renewable Energy, UT, on behalf of UT, to please be seated on the chair to sign the MOU. On behalf of LHDC Leh, I would request Shri Sachin Kumar Vaishya, Deputy Commissioner and Chief Executive Officer, to please be there. And on behalf of ONGC Energy Center, I would request Shri Sanjeev Katti, Director General ONGC Energy Center, to please be seated for signing the MOU. So this is the moment which we, not just in Ladakh, but as India, is going to cherish it forever and ever. So these are the copies in front of. Briefly, ONGC Energy Center was set up by ONGC, the parent company, to look beyond hydrocarbons. So we work in all the renewable energy areas like hydrogen, which is now becoming important for global warming, reduce the global warming impact. We are working in solar thermal, we are working in bioenergy, kinetic hydro. Those are all the renewable and alternative energy routes. And today we are entering into geothermal arena. Geothermal energy, as you all know, is very unique. 24/7, it is the only renewable energy that does not need storage. And specifically for Ladakh, I think geothermal energy has additional attraction. Besides doing the power, we will have a lot of hot water available that can be used for a lot of purposes. Space heating, buildings or greenhouses, swimming pools, tourism, all of this. So it will lead to overall development, not just the power, but all of these peripheral things. Already have been practiced in Iceland, and this area will have tremendous impact on this once we start the geothermal energy projects. This will go a long way in making Ladakh carbon neutral, and that's the mission announced by the Honorable Prime Minister. This is a collaboration between LHDC, the UT administration, and ONGC Energy Center. I look forward to be a part of the carbon neutral Ladakh mission, as well as reduce the pollution, CO2 emissions, and global warming. May these efforts be a catalyst for overall development of Ladakh. Ladakh का सर्वांगीण विकास. जय हिंद. जिसे
अभी ONGC के डायरेक्टर साहब ने कहा है, ये वाकई में जो है एक हिस्टोरिक डे है, जिसका बहुत बेसब्री से सभी को इंतज़ार था। और ये लद्दाख में इसका पोटेंशियल होने के बावजूद इसका प्रॉपर एक एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया था। तो आप यूनियन टेरिटरी घोषित करने के बाद, केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद से जो है लद्दाख में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनिशिएट हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे नई चीज़ें यहाँ पे लद्दाख में शुरू हुआ है। तो जैसे कि ये जियोथर्मल जिसका जो आज जो MOU साइन हुआ है, ये आफ्टर अ लॉन्ग थॉट प्रोसेस के बाद जो है फाइनली जो है आज यहाँ पे इस MOU के शेप में जो है ट्राइपार्टाइट जो है एक MOU साइन हुआ है, जिसमें UT एडमिनिस्ट्रेशन, LHDC और LHDCA और ONGC का एक ट्राइपार्टाइट एक प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट के शेप में इसका गठन किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का 3 उद्देश्य के साथ, कुछ उद्देश्य, खास उद्देश्य के साथ हमने शुरू किया था इसका। सबसे पहले तो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल फ्री बनाने का, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी इच्छा अनुसार जो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल फ्री बनाना है, उस लक्ष्य के साथ भी जो है इस पायलट प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे माननीय MP साहब का बहुत एक कंसिस्टेंट इनका जो है एक इस पे अप्रोच रहा है। और इस प्रोजेक्ट को आज जो है फॉर्मली हम जो है एक लीगल शेप दे पा रहा है। दूसरा जो है इसको एक लद्दाख को जो है इस प्रोजेक्ट से जो है एक इकोनॉमिकली एक जो वाइबल रीजन बनाने का भी इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में भी लद्दाख जो है एक इकोनॉमिकली वाइबल एक जगह बनेगा। और इसमें एक और उद्देश्य के साथ भी है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। हमारे जो लोकल्स यहाँ के लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इससे बनने से बहुत ज़्यादा खुलेगा और नए एवेन्यूज़ क्रिएट होगा। तो जियोथर्मल पावर प्लांट के अलावा जो है इसमें बहुत सारे और भी पोटेंशियल है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट इसके साथ इन्वॉल्व किया जा सकता है आने वाले दिनों में। तो ऐसे कुछ खास उद्देश्य के साथ जो है इसका शुरू हुआ है। तो मैं इसमें माननीय LG साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी जो है इस प्रोजेक्ट को फाइनली जो है यहाँ तक पहुँचाने का आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आपका हमेशा से जो है लद्दाख के प्रति जो है आपका इस नए UT को एक सक्षम बनाने के लिए आपका जो सहयोग रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और उसका नतीजा ही है जो ऐसे प्रोजेक्ट का यहाँ पे गठन हो रहा है। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वाकई में हिस्टोरिक दिन है और इसी तरह प्रकार के जो है बहुत सारे इस नए UT में आने वाले दिनों में हम उम्मीद किया जा सकता है। तो इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। तो दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आपकी लीडरशिप में लद्दाख आज बिल्कुल एक नए डेस्टिनेशन पे कदम रख रहा है। और ख़ासकर जियोथर्मल प्रोजेक्ट को लेके मुझे मालूम है 2014-15 से लेके हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री तुफतान सवांग जी ने कंसिस्टेंटली इसका जितना परस्यू किया, ख़ासकर MNRE के साथ, आइसलैंड एम्बेसी के साथ, और तब डॉक्टर अप्सरा जी ने जो है बहुत सारी रिसर्च लिटरेचर हमें जो प्रोवाइड किया। और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जियोथर्मल के बारे में, ख़ासकर आइसलैंड कंट्री के बारे में, पुगा के बारे में, छुमाथम के बारे में काफ़ी स्टडी करने का जो मौका मिला। और इतने लंबे समय के बाद आज ऑफिशियली फॉर्मली एक MOU, ट्राइपार्टाइट MOU साइन होके तो इसको आगे लेके जाने के जो कार्रवाई हो रहा है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन कार्बन न्यूट्रल लद्दाख, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत में इसके साथ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि एक सस्टेनेबल इंडिया के साथ, सेल्फ सस्टेन इंडिया के साथ सेल्फ सस्टेन लद्दाख को लेके जाना, एंड वोकल फॉर लोकल, जो लोकल रिसोर्सेज को जो इको फ्रेंडली किस तरह हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे विजन्स के साथ जो है आज लद्दाख आगे बढ़ रहा है। तो ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स आज हो रहा है।
तो आज के इस MOU ऑफिशियली साइन होने पे मैं एलजी साहब को धन्यवाद देते हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। टशीक हसन साहब को आपकी लीडरशिप में ये MOU साइन हो पा रहा है, और साथ ही साथ इसमें जो काम किया हमारे रविंदर साहब और डिप्टी कमिश्नर सचिन जी और जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे लद्दाख वालों की ओर से। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। Natural bounties. It has so much riches. They have never been actually coming into play for the benefit of the people of Ladakh. Geothermal energy is just one example. But you look at Pashmina, you look at sea buckthorn, you look at our handlooms, our handicrafts. The nature has been very kind. Sometimes people say that you are going to a very harsh environment, unlivable conditions. I say I am going to a place which is so rich, which has good people, which has people who want development. They have been crying for development, and development has not been coming to them. A UT is the beginning of that development process. This is among the first steps which one can take for carbon neutrality. But more importantly, I would like to say that one would actually like to see a Ladakh maybe 20 years, 30 years, 40 years down the line, when I contribute to the national exchequer rather than me getting budget from Government of India. It is possible here. That is what I see. Look at the riches. I mean, I just have to repeat this. It is tremendous. We have to be able to exploit it. Now, he is setting up a 1 megawatt pilot project. Maybe the capability or the potential there is maybe 100 megawatt, 200 megawatt. 200 megawatt. 200 megawatt would be great. It would give you very steady energy 24/7. Today we struggle. Your Hydel project, 45 into 2 projects, 90 megawatt, what do they give me today? In winters when I actually need it, 15 megawatt. Solar project, दिन में दे देते हैं, रात को जब मुझे असल में पावर चाहिए, I don't have power. Now 200 megawatt of steady power coming from a geothermal source. Fantastic for development of Ladakh, and fantastic from the economic point of view. And geothermal is just the first part. We have to look at what Iceland has done, what other countries have done in terms of development of tourism around it, in terms of development of greenhouses. And now that is something which I feel has tremendous potential for Ladakh. You can become a granary of vegetables, other things. In Ladakh, I say that why a 60-foot greenhouse? Why not a kilometer-long greenhouse? Why not a 5-kilometer-long greenhouse? With that sort of energy available there, it is possible that during winters, instead of being dependent on cargo services, which we are doing today, we should become not only independent, we become net exporters of vegetable, and that too off-season vegetables, which would give high value to us. Now, these are the potentials of the place which we would need to exploit. I was in Panamik recently and stayed in a guest house, the government guest house, and you can see the floor is heated with water. I don't need, in this winters, I don't need a heater. This is among the few places in Ladakh which has running water. When you press the flush, it works. Now, Panamik is a place which, again, even if I get smaller amounts of energy there, but it is great to exploit. So there are so many places where geothermal energy is available. I mean, I would recommend everybody here to try Panamik. In fact, it should develop as a tourist center for the sheer value of staying next to Siachen River in such beautiful circumstances. It's lovely to be there. So I think we are making a very good beginning. I must thank and compliment our chairman, LASDC, because he has taken this initiative. He has made this possible, that this tripartite is signed. And
the credit goes to him for bringing this development to Ladakh. Thank you so much. All I would say is that ONGC I have been following. I was in Tripura, they set up a 750 megawatt in Tripura. Now ONGC is again here, and I hope 200 megawatt is only the beginning. You should do much more. So I think the ONGC is good for the state, and I'm sure that under his leadership, ONGC would put up this project very quickly and very quickly ramp it up to 200 megawatt. We would look forward to that. And of course, you would make Tripura is getting, I must say, out of that 750 megawatt, they are earning something like 100 crores a year. So if 750 gives 100 crores, 200 crores, 200 megawatt, तो कुछ तो देगा यहाँ पे income. We should get some income out of it. So this is the sort of income that we are looking forward to. So I must thank ONGC Energy Center for taking this initiative. It's a great thing to do for Ladakh and for the country, because the country doesn't have any geothermal plant as of today. It's a new thing, it's a new concept, a new beginning, and they deserve all the praise, all the thanks for the great effort that they would be starting here. Thank you so much. These words, I think, let me wish the project every success. Let it come up as fast as possible and bring benefits to entire Ladakh. Thank you so much.